Dr. Ghulam Yaseen to please start the proceedings. Assalamu alaikum. I'm really thankful for this chance to stand here and talk with you today. It means a lot to me to share my experience in holistic healing. Being invited here to speak about my work is a big deal, and I am grateful for this opportunity. As has been announced, I am from homeopathic desk. I am related with homeopathy profession. Dr. Tariq Aziz, your kindness in inviting me to share my work treating thalassemia, hemophilia, and blood disorders. I am working on these diseases from last 15 years, and with the blessing of Almighty Allah, we have lot of success stories. And this presentation is, I think so, my fifth presentation. I have presented my 3 presentations before this. I have presented here a case of pure red cell aplasia, and behind the scene, the story is I have blessed a child in 2008, and that was diagnosis of pure red cell aplasia at that time. So डॉक्टर्स ने कहा कि जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, तो आई ट्रीटेड माई सेल्फ एंड माई सन वाज क्योर्ड जस्ट इन 8 to 9 months, and after that I have started that work feasibilillah at my clinic at the platform of Sahara Welfare Foundation. In homeopathy, we don't just look at the patient illness, we pay attention to everything about the patient. How they feel physically and mentally, what on their mind, their emotions, and even their personality, physical structure. Every little sign or feeling is important to us. Whether it's a small ache or something serious illness, just like cancers or blood cancers, we have in our success stories AML, ALL, CML. We treat the whole person, not just their illness, considering everything that makes them who they are. I extend my deepest appreciation to each one of you for your open-mindedness and dedication to advancing the field of medicine. Let us continue to learn from each other with our collective knowledge and expertise for the treatment of those who deserve. We as homeopaths move alongside with allopathic doctors. Both of our medical system aim for the same goal: to cure diseases and make people healthier. We share the common purpose of eradicating illness. In many ways, we are alike. Homeopaths also serve as family physician and caring for individual and their well-being. Today, I will present a case of hemophilia that was well managed with homeopathic medicine. So here is a little introduction of hemophilia. Hemophilia is usually an inherited blood disorder in which the blood does not clot, and that can lead to spontaneous bleeding as well as bleeding following injuries or surgery. Blood contains many proteins called clotting factors that can help to stop. People with hemophilia have low levels of either factor 8 or factor 9. The severity of hemophilia that a person has is determined by the amount of factor in the blood. The lower the amount of the factor, the more likely it is that bleeding will occur, which can lead to serious health problem. Internal bleeding can damage organs and tissue and be life-threatening. Small cuts usually are not much of a problem, and in severe conditions, the main concern is bleeding inside body, especially in ankle and elbows.
हमने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे बच्चे दे हैव नॉट डिसेबल्ड इन देयर जॉइंट्स, दे कैन नॉट वॉक, दे कैन नॉट मूव, कि ब्लड जो है उनके जॉइंट्स में इंटरनल ब्लीडिंग के वाले से क्लॉट हो जाता है और वो बेचारे सारी ज़िंदगी माजूरी की ज़िंदगी गुजारते हैं। Hemophilia is almost always a genetic disorder and treatment includes regular replacement of the specific clotting factor that is reduced. Symptoms: bleeding in the joints. This can cause swelling and pain और tightness in the joint. सबसे बड़ा इशू ही इन बच्चों का यही होता है कि कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी चोट की वजह से, फॉल की वजह से, या बच्चे आपस में एक दूसरे को ज़ोर से पकड़ भी लेते हैं, या किसी बच्चे को किसी बड़े ने उछाला है और उसको पकड़ा है तो वहाँ पे भी उसके ब्रूज बन जाता है और इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इट ऑफन अफेक्ट्स द नीज, एल्बोज एंड एंकल्स। ब्लीडिंग इनटू द स्किन which called bruising or muscles and soft tissue causing a build up of a blood in the area called hematoma. Bleeding of the mouth and gums and bleeding that is hard to stop after losing a tooth. ख़ास तौर पर जब बच्चों के दांत निकलते हैं तो उस वक्त इनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या अगर इनिशियली स्टेजेस पे सर्कमसिजन इनके हों तो उस वक्त भी फर्स्ट साइन इनका जो है ना वो बहुत ही बुरा होता है कि वो ब्लीडिंग जो है ना वो स्टॉप अप नहीं होती, जिसकी वजह से इनको फिर ट्रांजामीन और डिफरेंट फैक्टर्स के इंजेक्शन और फौरी तौर पर इनको जो है ना वो मेडिकल फैसिलिटी देनी पड़ती है। ब्लीडिंग आफ्टर देयर सर्कमसिजन, ब्लीडिंग आफ्टर हैविंग शॉट्स सच एज वैक्सीनेशन, ब्लीडिंग इन द हेड ऑफ एन इन्फेंट आफ्टर डिफ़िकल्ट डिलीवरी, ब्लड इन द यूरिन और स्टूल, फ्रीक्वेंट हार्ड टू स्टॉप नोज ब्लीडिंग। अक्सर का बच्चे टच कर देते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मार देते हैं, या कोई बड़ा बच्चे को खिलाते हुए उसके मुंह पे हाथ मारता है तो इनमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सो आई एम प्रेजेंटिंग हेयर अ केस ऑफ 8-year child that is the first report of that child in 2013 where the factor level is only 2.6%, and in 2020 the factor 8 level is only 3.6, which is too low. So at the age of 1 year he fell down and severely injured his lip. Bleeding did not stop for 4 to 5 days, and that was the first time he diagnosed severe hemophilia factor 8 deficiency, and that level was only 2.6. When he came in our homeopathic OPD 6/9/2020, that was the first visit of that little master, file number is 1020. He had recurrent episodes of internal and external bleeding, provoked and unprovoked. 5 to 6 bags of FFP and injection of factor 8 in previous month was given. He was given homeopathic medicine for a month on 2020. 4/10/2020, bleeding once from gums that stopped on its own with our homeopathic medicine, and no transfusion was needed at that time. On 1/11/2020, he plucked his molar tooth. Bleeding was recurrent. 2 bags of FFP was transfused. 6/12/2020, injury of left calf muscle which was cured of its own with our homeopathic medicines, and no transfusion was needed at that time. And 3/1/21, molar teeth bleeding, 4 bags of FFP was transfused. 7/2/21, dental caries and bleeding stopped on its own due to homeopathic medicine, and no transfusion was needed at that time. And 7/3/21, cut on tongue, bleeding stopped after applying our homeopathic medicine, which is top medicine gallic acid. No transfusion was needed. 6/6/21, ankle fracture due to fall, and 6 bag of FFP was transfused at that time.
4721 ankle swelling and pain, and 2 bag of FFP was transfused. 5921 gums bleeding and bleeding from tongue stopped with our homeopathic medicine drops, no transfusion was needed. And 31021 gum bleeding stopped with our homeopathic medicine, no transfusion. 71121 leg pain and swelling after injury, only 1 bag transfused instead of 4 to 5 bags. So 51221 bleeding from lips after injury, only 2 bag was transfused of FFP. 6222 elbow swelling that cure on its own, no transfusion was needed. And 632022 no symptoms and no transfusion needed. 5622 injury on big toe by a motorcycle and bleeding was there but no transfusion needed because our homeopathic drops was applied locally and internally orally. 3722 cut on tongue during eating and no transfusion was needed at that time. 7822 knee injury, 2 bags only FFP was needed. And 492022 no symptoms and no transfusion needed. 21022 no symptoms and no transfusion, no bruise appear on the body and there is no bleeding at that time. 6112022 injury on right hip cured gradually, no transfusion was needed at that time. Instead of 4 to 5 FFPs and factor 8 injection was needed in the start of our treatment. 41222 no symptom, no transfusion, and after advice of our make a factor 8 level, and on 15/12/22 factor 8 level was 47%, which was at the start of treatment only 2%. 5/2/23 no symptoms was symptoms and no transfusion was needed. 5/3/22 no symptom, no bruise and no bleeding and there is no need of any transfusion. And that is the final report from the test zone laboratory, and factor 8 level is 47% and 50% is our normal factor level, and this little child has at that time 47% of factor level. At Sahara Welfare Foundation, it's not just a single case of hemophilia. We are treating almost more than 200 cases of hemophilia, just like this little master. They are enjoying their lives, alhamdulillah, just like our normal kids. Not only hemophilia, but we are dealing other bleeding factors, IDP, Glanzmann thrombocythemia, factor 1, factor 7, factor 5 and factor 13. Or with the blessing of Almighty Allah, alhamdulillah, our success stories are day by day increasing, and the little masters are enjoying their lives. सबसे बेहतर हमारी जो सबसे बड़ी इशू ये है, और मैंने जिस तरह आपको बताया कि इसके पीछे एक स्टोरी थी कि मुझे अल्लाह ताला ने बेटा दिया 2008 में, वो प्योर रेड सेल एप्लीजिया का था, और उन्होंने कहा कि जी देयर इज़ नो ट्रीटमेंट वी हैव। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका ट्रीटमेंट किया, और उसके बाद मैंने इन बच्चों का फ़ीसबीलिल्लाह इलाज करना शुरू किया। आज मेरे पास पूरे पाकिस्तान से 1200 बच्चा रजिस्टर्ड है, जिसमें हमारी सक्सेस स्टोरीज़ में AML है, CML है, उसमें ALL है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, एक्यूट ल्यूकीमिया है, और उसमें एप्लास्टिक अनीमिया है, जिसमें हमारे आर्म्ड फोर्सेस से बहुत सारे केस हमें रेफ़र किए गए, जिसमें बोन मैरो की ट्रांसफ्यूजन का वो मैंने केस लास्ट टाइम प्रेजेंट किया था कॉन्फ्रेंस में वारी होटल में, कि 40 लाख उसके उन्होंने बोन मैरो ट्रांसफ्यूजन के लिए पे भी कर दिए थे, लेकिन जो उन्होंने वो उनका टेस्ट था बोन मैरो का, वो मैचिंग नहीं हो सका, ना उसकी सिस्टर के साथ, ना मदर के साथ, ना फादर के साथ, ना दूसरे उसके ब्रदर के साथ। तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि जी बोन मैरो 50% मैचिंग है, तो सो वी कांट गो फॉर द बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो वो किसी ने रेफ़र की हमारे पास, तो विद द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह ही वाज क्योर्ड इन जस्ट 7 to 8 months। तो दैट इज़ ब्लेसिंग फॉर द होम्योपैथी, फॉर द नेशन। तो मेरा ख्याल है कि अगर हम आप लोगों के पास पेशेंट बहुत है, आप लोग माशाल्लाह जिस स्टेज पे हैं और जिस लेवल पे हैं, हम उस लेवल पे नहीं हैं, हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट बहुत कम होता है,
और आप लोगों के पास नंबर ऑफ़ पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, और मैं समझता हूँ कि अगर हम इस नेशन के लिए कोऑर्डिनेशन कर लें तो हम बहुत सारे बच्चों को ईज़ कर सकते हैं। थैलेसीमिया का मैंने जिक्र किया, हम थैलेसीमिया के बच्चों को भी ट्रीटमेंट देते हैं। तो मेरे पास इस वक्त कुछ मोर देन 750 थैलेसीमिया पेशेंट्स हैं, और इन फ्रॉम 2008 2010 टू टिल नाउ हम 40,000 के करीब ब्लड बैग बचा चुके हैं नेशन के। और एक ब्लड बैग के लिए जो पेरेंट्स को है वो 1300 to 1500 पे करना पड़ता है जस्ट फॉर ब्लड बैग। और जो इदारे काम कर रहे हैं, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, उनका आप देखेंगे क्या कंडीशन है, और जो लोग ब्लड देते हैं, डोनेट करते हैं, अगर 40,000 हमने 12 ईयर्स में बचाए हैं सिर्फ थैलेसीमिया में, और इसी तरह के हीमोफीलिया के फैक्टर 8 का एक इंजेक्शन जो इस वक्त 10,000 का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसे बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल होम्योपैथिक मेडिसिन से हो गए हैं। तो अगर हम ये रात जिस तरह डॉक्टर साहब ने कल बताया कि भी हमें जीपीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और हमें जो फैमिली फिजिशियन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं समझता हूँ कि हम इस नेशन के लिए अपनी उस अना को दफन करके इस नेशन के लिए अगर हम कोऑर्डिनेशन बढ़ा लें तो हम बहुत बड़ा बर्डन हॉस्पिटल से, इदारों से हटा सकते हैं। और प्रिफरी में बैठे हुए जनरल फिजिशियंस जो हैं, खा वो होम्योपैथ हैं या एलोपैथ हैं, वो अपनी नेशन को बेहतरीन फैसिलिटी दे के नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। इट्स ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। Allopathy and homeopathy go hand in hand. Nowadays, the allopathic doctors are also understanding that if you advise the patient to have homeopathy along with the allopathic medicines, they can both go parallel with each other. So, the very next speaker of ours is the pivot of family medicine. As far as my memory goes, she was an associate professor in University of Health Sciences, and so I would like to invite the next